Welcome to week 6, lecture number 2. I am Dr. Ch05. In this lecture, we will cover the synthesis or implementation of sequential circuits using JK and T-type flip-flops. After going through this lecture, you should be able to implement or synthesize sequential circuits using both JK and T-type flip-flops. We will also see design process of a binary counter and its implementation using T-type flip-flops. In a series of previous lectures, we have covered the design steps for sequential circuits in detail. Essentially, इसमें जो step number 1 to step number 4 है, they remain the same irrespective of the choice of flip-flop. Essentially, the focus of this lecture is that if we choose JK or T-type flip-flops, then how will our steps, जो 5 to 7 हमारे steps हैं, how will they differ from T-type implementation जो कि हमने previous lectures में देखी हुई है. So for the purpose of learning the synthesis or implementation using JK and T-type flip-flops, we'll use an example of a sequence detection problem जो कि हमने पहले भी cover की हुई है 0110. So the first step in the design process is to derive the state diagram for the particular problem. तो ये last lecture में हम देख चुके हैं कि हम इस required sequence के लिए state diagram Mealy type कैसे derive कर सकते हैं. But in this lecture, let's see another way which is more algorithmic, and if we follow the particular sequence of steps तो हम उसी same state diagram पे पहुंच सकते हैं but with the chances of errors reduced. So starting with हमें पता है कि हमारा sequence 4 bits है. तो Mealy type state diagram में last time हमने cover किया था कि Mealy type state diagram will have 4 states because it's equal to the number of bits in the sequence. तो 4 states हम अपनी draw कर लेते हैं with S0 as our initial state, S1, S2 and until S3 is our last state for the Mealy type state diagram. ठीक है? The next step is we want to see that if our required sequence is achieved, हम state transitions देखना चाह रहे हैं between S0, S1, S1 and S2, S2 and S3. Okay, and that will only occur जब हमारी required sequences at input, required bits at input आती जाएंगी. For example, at S0 when 0 is achieved, ठीक है, then we'll transition to S1. When on S1 if 1 at the input is obtained, then only we will transition to S2. तो हम ये जो path है to our required sequence वो हम draw कर सकते हैं, ठीक है, essentially. Or of course our output will be low for all these state transitions because our required sequence has not been obtained or achieved at the input yet. उसके बाद हम we turn our attention to individual states और हम उस पर देखते हैं कि otherwise अगर हमारे required sequence के अलावा inputs आ रही हो then what happens. So in case of the initial state S0, it's pretty simple that we will stay on the initial reset state पे ही रहेंगे and we'll keep our output low in case of otherwise input if the input is high. Now at S1 we have got two options. We have already covered the option जिसमें हम state transition कर सकते हैं to the next state. अब हमारे पास we are in the otherwise case जब x input 0 हो जाती है, low होती है, we have only two options. Either we can stay on S1 or we can transition back to the reset state. In order to figure out that हम ये process यहाँ पे देखते हैं. तो हम क्या करेंगे कि last जो bit है we'll compare it with a state S1, ठीक है. If this turns out to be a match, we can stay, our next state will be S1, we can stay on the same state. और अगर ये comparison false हो जाता है then we'll have to transition to the reset state. इस केस में हम अपने एग्जांपल में देखें तो ये comparison true हो रहा है. This means we'll stay at S1 and we'll keep our output low. Okay, for any intermediate state such as S2 हम यही process दोबारा follow कर सकते हैं. S2 is actually state जो है वो show कर रही है 01 को. Okay, तो हम again अपना string complete कर लेते हैं for the other input which is x equal to 0. String is 010, and what we'll do is we'll take the last number of bits equivalent to the number of bits of the states, यानी last two bits in this particular case, उसको हम compare करेंगे with our state in order to determine our next state. अगर ये match हो जाता है
then we will stay at S2. ठीक है, at the same state. If this doesn't turn out to be match, जैसे कि हमारे example में नहीं हो रहा, then what we'll do is we'll take the last one bit and compare it with state 1. Okay, if this turns out to be a match, we can go to state 1 और हम state transition कर सकते हैं to S1. Otherwise, अगर ये भी match नहीं होता, then we'll have to reset to the reset state. तो इस केस में आप देखें, it turns out to be a match in our particular example. This means a next state from S2 will be S1 when input is 0, and we'll keep our output low as well. Okay, so for all intermediate states we will actually follow this process. For the last state, for example, पहले हम नॉन ओवरलैपिंग की बात करते हैं. In that particular case, दोनों input cases में we will transition back to S0 and we will compare the last bit with the last bit of the required sequence in order to make sure कि हमने अपने input को high करना है या low करना है. But for example, for overlapping one bit overlap case, हम क्या करेंगे कि S3 पे जो इनपुट है नेक्स्ट स्टेट ट्रांजिशन के लिए उसको कंपेयर करेंगे विद द फर्स्ट स्टेट. व्हाई? बिकॉज वी नो दैट द फर्स्ट स्टेट इज रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट बिट ऑफ द रिक्वायर्ड सीक्वेंस. तो ओवरलैप उसी सूरत में हो सकता है जब लास्ट स्टेट और जो लास्ट हमारी बिट है इट मैचेस विद द फर्स्ट बिट. हम इसको S1 से कंपेयर करेंगे. इफ इट टर्न्स आउट टू बी अ मैच, विल गो टू S1, अदरवाइज विल रीसेट. ठीक है, तो स्टेट ट्रांजिशंस तो इस S3 की हमें पता लग गई, हम कैसे करेंगे. बट व्हाट अबाउट व्हेन टू मेक आवर आउटपुट हाई? इन ऑर्डर टू डिटरमिन दैट, we will compare the last bit at S3 with the last bit of our sequence. If it's a match, we'll make the output high. For example, S3 पे 0 अगर करता है इनपुट, तो नेक्स्ट स्टेट जब हम उसको S1 से कंपेयर करेंगे तो इट टर्न्स आउट टू बी मैच. नेक्स्ट स्टेट हमारी S1 डिटरमिन हो जाएगी इससे. And when the input is 0 and we compare it with the last bit of our sequence, that is also a match, so we'll also turn our output high and we'll go to S1. अगर input पे 1 अगर होता है and we are at S3, so this does not match with state 1, and when we compare this 1 with the last bit of the desired sequence, this is also false, so we'll transition to the reset state and we'll also keep our output low. Next step is state reduction, but before we can reduce our states, we have to go from our state graph या finite state machine to our state table. तो हमें यहाँ से यहाँ transition करना पड़ेगा as the first step. Once we obtain our state table from our state graph, the next step हम follow कर सकते हैं, which is state reduction, and we'll use implication table based method which we have already covered in the previous lecture. So starting with S0 and S1, अगर हम दोनों states को compare करें, outputs are similar, so now we have to consider the next states. और इसमें हमारी condition ये बनती है कि if S0 is equal to S2, then only we can say that S0 and S1 are equivalent. तो ये condition हम यहाँ पे mention कर देंगे. We move on to S0 and S2. The outputs are same, and in terms of next state, if S0 is equals to S3, if this condition holds, then we can only say that these two states are equivalent. तो ये condition हम यहाँ पे once again mention कर देंगे. In terms of S0 and S3, we can see that for input 0, the outputs differ, so simply these states are not equivalent. Coming on to S1 compared with S2, अगर हम S1 और S2 को देखें, outputs are similar, but the condition for their equivalency is S2 must be equivalent to S3. S1 और S3 के comparison में, of course, we can simply see that the outputs differ, so we'll mark across here. Similarly, S2 और S3 को अगर देखा जाए तो outputs differ as well for the input low case, so हम इसको भी mark कर देंगे with a cross. Now coming on to S2 is equal to S3 condition. अगर हम यहाँ जाके S2 और S3 वाले बॉक्स में देखें तो we've already crossed it out that these two states cannot be equal, so this condition cannot hold, or therefore S1 and S2 cannot be equivalent state as well. S0 equal to S3 condition हम यहाँ पे already हमने fill की हुई है, हम इसको देख सकते हैं.
or of course this condition does not hold. So on same grounds, S naught cannot be equivalent to S2. And when S naught cannot be equivalent to S2, this condition also does not hold, और इसको भी हम cross कर सकते हैं. Essentially what this means is that there are no equivalent or redundant states. So state reduction in this particular case possible नहीं होगी because the state diagram that we derived was most optimal. उसमें कोई redundant states नहीं थी. The next step is state assignment, और हमने previous lectures में देखा हुआ है that we have multiple options, but we'll choose the binary state assignment which is also usually the norm. और इस केस में हम देख सकते हैं कि S नॉट को हमने 0 बाइनरी कोड साइन कर दिया. S1 0 1, S2 is 1 0 and S3 is 1 1, and we can also determine from here that we'll require two flip-flops जिनके state variables के नाम हमने A और B determine कर लिए to implement our design. The next step is हम binary coded state table चाहिए, जिसके लिए what we'll do is we'll replace the state names with their binary assignment. जो बाइनरी कोड्स उनको हमने साइन किए. फॉर एग्जांपल दिस इज S0, S1, S2 एंड S3. एंड सिमिलरली जो नेक्स्ट स्टेट्स हैं उनको भी हम दिस इज S1, S0, S1, S2, S1, S3, S1 एंड फाइनली S0. उनको भी हम रिप्लेस कर देंगे विद देयर बाइनरी कोड्स in order to obtain our binary coded state table. Once we obtain our state table, the next step is the choice of flip-flops. और let's say for demonstration purposes हम पहले D type flip-flop choose करते हैं for our implementation. We have already covered this in previous lecture. तो essentially we know that for D type flip-flops जो हमारी input equations हैं for D type flip-flops we can derive them directly from the next states. उसके बाद जो steps हैं of course you already know them, that we can derive the equation for dA, dB and y using Karnaugh maps. So let's just look at them. We already know this process, so we don't need to repeat and how we get these equations. So dA turns out to be x and a XOR b. उसके बाद हम dB के लिए Karnaugh map बना लेंगे and the equation जो कि हमारे पास resultant आती है that is x complement or a and b complement. Finally for y we can deduce कि हमारे पास y की equation आ जाती है a and b and x complement. Once we obtain our flip-flop input equations and output equations, the next step is we can draw the logic or circuit diagram using D flip-flops. So as you can see, दो flip-flops use हुई हैं with state variables A and B. This is the combination logic जो कि हमारी flip-flop input equations को implement कर रही हैं. For DA we can see that DA is A XOR B and X, and DB is A and B prime or X prime, and finally our output is A and B and X prime. Now let's see if we choose JK flip-flops to implement our sequential circuit, what's going to be the next step number 5, 6 and 7. So essentially अब हमें flip-flop inputs determine करनी है जिन्होंने ये particular state transition excite की हैं. ठीक है, we cannot directly map the flip-flop inputs to the next states in this case, as we know that the characteristic equation for JK flip-flop is different. और essentially what we are after is कि हम देखना चाह रहे हैं कि वो कौन सी inputs थी JK पे which actually excited or triggered these state transitions. उसके लिए हम consider करते हैं the excitation table of a JK flip-flop जो कि आपने last lecture में देखा है. Just a brief review of this excitation table, starting with the first state transition which is 0 to 0. This can either occur with two possibilities: when both the inputs were 0 0 and there was no change in the present and the next states, or the second condition could be कि जब k high था और flip flop reset हुई है तब भी हमारी next state 0 ही इस केस में determine होगी. तो इस पर्टिकुलर केस के लिए हम इनपुट्स अपनी डिसाइड कर सकते हैं कि J will be 0 but K can be 0 which will occur in no change. तो हमारी प्रेजेंट स्टेट 0 थी, नेक्स्ट स्टेट भी 0 रहेगी, और K could be high. ठीक है,
which means the flip flop will be reset and the next state will be 0. अगर हम सेकेंड स्टेट ट्रांजिशन को देखें 0 to 1, तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज है, आइदर द फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स जो हैं वो 1 दोनों हाई आई थी, जे और के और बोथ हाई एंड द फ्लिप फ्लॉप टॉगल्ड ओके फ्रॉम 0 to 1, और दूसरा क्या हो सकता है कि के वॉज 0 बट जे वॉज हाई एंड द फ्लिप फ्लॉप वॉज सेट, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट दिस प्रेजेंट स्टेट. इस स्टेट ट्रांजिशन को अगर हम थर्ड को देखें 1 to 0 स्टेट ट्रांजिशन, तो दिस कैन अकर in two scenarios. First of all, if J and K were both high and the flip flop was toggled, 1 to 0 toggle हुई थी, और दूसरा क्या हो सकता है, if J was 0 and K was high, which means the flip flop was reset, ठीक है. And finally, the state transition 1 to 1 can occur in two scenarios, either because of no change when J was 0 and K was 0, और दूसरी ऑप्शन क्या हो सकती है, when K was high and J was 0, the flip flop was set. Okay, तो इस तरह हम डिटरमिन कर सकते हैं कि ये स्टेट ट्रांजिशंस जो अगर हुई हैं उनके हिसाब से what were the flip flop inputs that excited or triggered these state transitions. Once we have the excitation table, हम अपनी flip flop inputs हैं उनको आराम से fill in कर सकते हैं by looking at these state transitions. For example, A was 0, ठीक है, इन द प्रेजेंट स्टेट, और नेक्स्ट स्टेट भी ए की 0 ही है, तो वील गो टू द फर्स्ट रो और हम लुकअप कर लेंगे यहाँ से फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स होनी चाहिए थी 0 एंड x. Similarly 0 to 0 state transition 0x here, 0 to 0 state transition यहाँ पे भी 0x आ जाएगा. For 0 to 1 state transition we know that j would be high and k can be don't care. Okay, for 1 to 0 state transition हम देख सकते हैं कि j is don't care where k is high. For 1 to 1 state transition j is don't care and k is low. For present state 1 है, next state 0 है, so 1 0 is don't care and 1, and finally 1 0 is also don't care and 1. तो इस तरह हम जे ए और के ए हमने डिटरमिन कर लिए यूजिंग द एक्साइटेशन टेबल. फॉर बी की स्टेट ट्रांजिशन से हम जे बी और के बी भी फिल इन कर सकते हैं. 0 to 1 मीन्स जे इज हाई एंड के इज डोंट केयर. 0 to 0 transition means 0 and don't care. 1 to 1 transition means don't care 0, and similarly don't care 1. 0 to 1 means 1 don't care. 0 to 1 means 1 don't care. 1 to 1 means हम यहाँ से देख सकते हैं कि don't care 0, and finally 1 to 0 state transition के लिए हम flip flop inputs determine कर सकते हैं. Once we obtain our flip-flop input equations for the JK type flip-flops, then the next steps are similar. We need equations for JA, KA, JB and KB, जो कि हम Karnaugh map से obtain कर सकते हैं. So JA turns out to be B and X, KA is B or X complement, JB is A or X complement, and KB is equal to X. And as you can see, ये जो हमारे पास don't care से flip-flop input equations, they have also helped us to minimize the logical expressions. Once we have the flip-flop input equations and the output equation, we can implement the circuit using JK flip-flops. दो JK flip-flops जैसे कि आप देख सकते हैं यूज हुई हैं with the same state variables A and B. This is the logic जो कि flip-flop input equations implement कर रही हैं. So for example, JA is B and X, KA is B और X complement, और इसी तरह हम देख सकते हैं JB is A और X complement and KB is equal to X. And finally our output जो है वो is similar to the D type implementation, A and B and X prime. Let's now see the implementation procedure if we choose T type flip-flops for implementation. Similar to JK type flip-flops, once again in this particular case
हमें डिटरमिन करना पड़ेगा कि व्हाट वर द इनपुट्स on of the T type flip flops which actually triggered or excited these next state transitions. उसके लिए हम excitation table of the T flip flop consider कर सकते हैं. This is simpler than the JK type flip flop excitation table. अगर हम पहली state transition को देखें 0 to 0 state transition है तो UC केस में होगी because we know from the characteristic equation of T type flip flops it only has two particular states, either no change or toggle or complement state. So 0 to 0 transition can only occur when the input T is 0 and no change has occurred. For the next state जो 0 to 1 transition हुई है उस केस में of course the input of the flip flop will be high ताकि present state toggle होके next state बन जाए. Similarly here we can also see a toggle, so T is the input should be 1 in order to excite or cause this state. Or finally 1 to 1 state transition में the input T should be low because there is no change between the present and the next states. तो once we हमारा जो excitation table है वो हमने देख लिया है, then we can use this excitation table to fill in our flip flop inputs. ठीक है, let's say state transition A की अभी हम देख रहे हैं 0 to 0, it should stay at 0. 0 to 0 is again 0. 0 to 1 is when the input at the flip flop was high, then only this state transition can occur. 1 to 0 is also high. 1 to 1, and similarly we can fill it for the rest of the state transitions. Similarly for B हम देख सकते हैं कि T will be high here, TB will be high here, और इधर हमारे पास TB will be low, TB will be high here because 1 to 0 toggle transition हो रही है. यहाँ पे once again TB will be low and TB should be high here. This is how we use the excitation table और हम अपनी flip flop inputs TA और TB को fill in कर सकते हैं. After that, once we obtain the flip flop inputs for TA and TB, तो हम implementation की तरफ जा सकते हैं और अपनी TA और TB की boolean expressions deduce कर सकते हैं from this state table. तो similarly हम Karnaugh maps draw कर लेंगे and TA turns out to be AX prime or BX and TB turns out to be AB prime or BX nor X. We have our flip-flop input equations and the output equation. We can implement our circuit using T flip-flops. So two T flip-flops हमने use किए हैं with state variables A and B. This is the combination logic. This is the equation implementation for TA and this is for TB. और हमारी output जो है that is ABX prime. Okay, similar to our previous designs. Now we are in a position to compare all the three implementations. Of course, all these three should be functionally equivalent. लेकिन हम देख सकते हैं कि there are a few comments which we can make that in terms of the complexity of the combination logic of the flip-flop inputs, JK stand out कर रही है and we can appreciate the fact that because of the all the don't cares जो कि हमारे पास JK के flip-flop input equations में occur करते हैं, for that reason हमेशा जो हमारे पास फ्लिप फ्लॉप इनपुट जो सर्किटरी है वो जेके फ्लिप फ्लॉप में सबसे मिनिमल होगी. बट यूजुअली व्हाट हैपेंस इज दैट डी फ्लिप फ्लॉप्स आर प्रेफर्ड इन ऑटोमेटेड डिज़ाइन टूल्स, ऑल्दो कि थोड़ी सी जो फ्लिप फ्लॉप इनपुट सर्किटरी है अगर आप वो देखें तो दैट इज बिट मोर कॉम्प्लेक्स दैन द जेके टाइप फ्लिप फ्लॉप काउंटर पार्ट. और टी टाइप फ्लिप फ्लॉप्स स्पेसिफिकली यहाँ पे देखें तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी टी टाइप फ्लिप फ्लॉप्स में आ रही है. बट एज विल सी in our next example that T flip flops are more dedicated or suited to counters. जब हम counters implement करेंगे in the next chapter as well तो हम देखेंगे कि T type flip flops are more suited to counters और उसमें ये जो flip flop input equations हैं ये complexity जो है ये भी furthermore reduce हो जाती है when we use T flip flop for counters. Okay, our next design example
जो कि अभी हम देखना चाह रहे हैं, दैट इज ऑफ अ बाइनरी काउंटर, और हम टी टाइप फ्लिप फ्लॉप बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे उसकी। एंड एज होमवर्क व्हाट यू कैन डू इज आप जेके टाइप फ्लिप फ्लॉप इम्प्लीमेंटेशन खुद कर सकते हैं। Let's suppose this is our problem specification or design requirement, and we have to design a 3-bit counter that counts in the sequence. This is a sequence given, so it counts from 0 to 7 and then repeats. Okay, so in order to better understand the problem, let's draw a block level diagram of the input and output specifications. So of course it has to be a sequential circuit, and essentially it has to be a finite state machines, as based on these clocks will be transitioning to these different states. Okay, so there's no input, but there is an output which is a 3-bit output. Let's call it A. ठीक है, 3 bits output है हमारी काउंटर की, इनपुट कोई भी नहीं है. At clock edges we are supposed to do the following transitions. ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा अगर इसकी टाइमिंग वेव फॉर्म देखें, then it will become more clear कि हम स्टेट ट्रांजिशन जो है वो अपनी कैसे कर सकते हैं, जिससे हमारे लिए स्टेट डायग्राम ड्राइव करना और इजी हो जाएगा. जस्ट फॉर एग्जांपल सेक एक हम टिपिकल इनपुट सीक्वेंस इसका देखते हैं. ठीक है, दिस इज आवर इनपुट क्लॉक और हमारे पास आउटपुट है ए. ठीक है, और फॉर सिंप्लिसिटी सेक लेट्स से हम काउंटर के आउटपुट को इंस्टेड ऑफ बाइनरी वी कंसीडर इट टू बी डेसिमल. ओके, तो लेट्स से इट वाज इन द इनिशियल स्टेट और ये 0 था. ठीक है, बिफोर द फर्स्ट क्लॉक एज, एंड द फर्स्ट क्लॉक एज अराइव्स, the output of the counter goes to 1, in the third clock edge to 3, and so on so forth until we reach 7, and then our counter will again be, according to our requirements, reset to 0 and start counting again on next clock edges. Okay, so essentially we can say that we are in state S0, and when the clock arrives हम S1 पे जाएंगे जहाँ काउंटर की वैल्यू 1 हो जाएगी, then S2, counter S2, S3 and so forth, so on so forth, S7, और finally we'll reset to reset state and start counting again. ठीक है, तो स्टेट डायग्राम अब इससे बनाना काफ़ी आसान हो चुका है. और फर्स्ट स्टेट और रीसेट स्टेट इज 0 0 0, एंड दिस केस हम उसको बाइनरी कोड असाइन भी कर देते हैं, विच इज 0 0 0. ओके, देन क्लॉक एज occurs and we move on to 0 0 1. ठीक है, counter goes to 1, and on next clock edge counter goes to 2, 3, 4, 5, 6, 7, and then back to the original position 0, back to 0 and start counting again. Okay, so this specifies a complete state diagram for this particular design problem. So once we obtain the state graph or the state diagram, next step हम directly आ सकते हैं. We can skip a few steps here because we won't require any state reduction. इसमें से कोई भी state हम reduce नहीं कर सकते. All states are required. Okay, so स्टेट रिडक्शन भी हमें वी डोंट रिक्वायर स्टेप नंबर 2, और बाइनरी असाइनमेंट भी अगर आप देखें तो हमने कर ली हुई है स्टेट्स में. ठीक है, इट्स नॉट कॉल्ड स्टेट S1 एनीमोर, ये बाइनरी असाइन कोड है टू ईच एंड एवरी स्टेट. दैट्स व्हाई यू कैन स्किप स्टेप नंबर 3 as well, और डायरेक्टली हम स्टेट टेबल पे आ सकते हैं, बाइनरी कोडेड स्टेट टेबल पे. तो एज यू कैन सी कि हम स्टेट ग्राफ से अपने बाइनरी कोडेड स्टेट टेबल ऑब्टेन कर सकते हैं. द प्रेजेंट स्टेट इज 0 0 0, तो नेक्स्ट स्टेट हमारी क्या होगी 1. स्टेट प्रेजेंट स्टेट 1 है, नेक्स्ट स्टेट 2, प्रेजेंट स्टेट 2 है, नेक्स्ट स्टेट 3, और ये काफ़ी सिंपलर है प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट कंप्यूट करना. फिर प्रेजेंट स्टेट एट 7, तो नेक्स्ट स्टेट 0 होगी. एसेंशियली हम अपनी एफएसएम को देख के स्टेट टेबल में नेक्स्ट स्टेट फिल इन कर सकते हैं. ऑफ कोर्स द नेक्स्ट स्टेप इज फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स डिटरमिन करनी है. तो वंस अगेन हम स्टेट ट्रांजिशंस देखेंगे. A2 में अगर आप देखें तो A2 में एक ये स्टेट ट्रांजिशन हो रही है, सो TA2 विल बी हाई हेयर. ठीक है, ऑन द फोर्थ इनपुट. और अगर हम देखें तो इसके अलावा स्टेट A2 में देयर इज वन मोर टॉगलिंग.
ठीक है, ट्रांजिशन हो रही है 1 to 0, यहाँ पे भी हमारे पास TA2 हाई होना चाहिए, इसके अलावा तमाम में लो होना चाहिए। फॉर A1 प्रेजेंट स्टेट विल टॉगल एवरी नेक्स्ट क्लॉक एज, यानी एक क्लॉक पीरियड छोड़ के नेक्स्ट क्लॉक पीरियड पे टॉगल करेगी। फॉर एग्जांपल टॉगलिंग हियर, देन इट रिमेन्स द सेम फॉर वन पीरियड, देन टॉगल्स अगेन, देन रिमेन्स द सेम फॉर वन पीरियड, देन टॉगल अगेन। तो TA1 भी इसी तरह 0101 टॉगल करता रहेगा। ओके, एंड फाइनली A0 में आप देख रहे हैं कि तमाम स्टेट्स में ही प्रेजेंट स्टेट टॉगल कर रही है नेक्स्ट स्टेट ऑब्टेन करने के लिए, तो इस वजह से TA0 विल बी हाई फॉर ऑल ऑफ द इनपुट्स। ओके, तो ये हम फिल इन कर सकते हैं। हमने कैरेक्टरिस्टिक टेबल यूज किया ऑफ कोर्स टी फ्लिप फ्लॉप का इन ऑर्डर टू फिल दिस फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स। जब फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स हमारे पास आ जाएं, ऑफ कोर्स देन द नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास क्या है कि हम स्टेट टेबल को यूज करके और फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशंस को यूज करके इक्वेशंस डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, कर्नॉफ मैप्स यूज करेंगे और डिराइव कर लेंगे अपनी फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशंस। सो TA0 में चूंकि तमाम आउटपुट्स TA0 वाज हाई, ठीक है, दैट्स व्हाई TA0 हम कह सकते हैं इज इक्वल टू 1। इसके बाद TA1 टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू A0 and TA2 turns out to be A1 and A0। तो अभी जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इन टर्म्स ऑफ काउंटर जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी होती है इनपुट इक्वेशंस की वो बहुत रिड्यूस कर जाती है, बिकॉज T टाइप फ्लिप फ्लॉप्स आर specifically suited for counter implementation. Once the flip-flop input equations are obtained, we can draw the logic diagram for our 3-bit binary counter. As you can see, इसमें 3 T type flip-flops use हुई हैं for our 3-bit binary counter. The outputs are from A0 to A2, जिस पे हमारा 3-bit counting sequence produce होगा on clock edges. Whenever clock transitions occur, हमारा काउंटिंग सीक्वेंस अपडेट होता जाएगा ऑन आर स्टेट आउटपुट्स व्हिच आर A0 to A2। अगर हम इनपुट्स देखें तो TA1 को हमने हार्डवायर्ड किया है 1 पे एज फॉलोइंग आर फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशन। TA1 is assigned A0, ठीक है, and TA2 is assigned the logical combination of A1 and A0. So this is essentially a 3-bit binary counter. In the next chapter, we are going to see more on counters. In this lecture, we covered the synthesis or implementation of a sequence detector, and specifically focusing on implementation using JK and T-type flip-flops. We also covered the design of a binary counter and demonstrated its implementation using T-type flip-flops. In the next lecture, we will start chapter number 6, which is registers and counters. And as homework, I would like you to implement the binary counter that we implemented in this current lecture, but I would like you to use JK type flip-flops. Thank you.